Hello viewers, today I am going to tell you about the stress management. Why stress occurs, how to resolve problem. आज की दुनिया इतनी अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हर किसी को ही स्ट्रेस हो जाता है आजकल। तो स्ट्रेस क्या है, इसको पहले जानते हैं। Stress is a process, not a diagnosis. We experience stress when there is an imbalance between the demands being made on us and our resources to cope with those demands. You may feel under pressure to do something and fear you may fail. अब एक्सपीरियंस से हम ये बताते हैं कि डिमांड अगर होती है और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हमको और उसको करने में फेल हो जाते हैं तो हमको स्ट्रेस होता है। द मोर इम्पॉर्टेंट एंड आउटकम द मोर स्ट्रेस यू फील। यू कैन फील स्ट्रेस बाय एक्सटर्नल सिचुएशन, टू मच वर्क, चिल्ड्रंस मिसबिहेविंग, एंड बाय इंटरनल ट्रिगर द वे यू थिंक अबाउट एक्सटर्नल सिचुएशन। अब बहुत अधिक काम हो या आपके बच्चे ठीक से बिहेव नहीं करते हो या एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, लेकिन ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेस हमेशा बैड ही हो। सम पीपल थ्राइव ऑन स्ट्रेस एंड इवन नीड इट टू गेट थिंग्स डन। व्हेन द टर्म स्ट्रेस इज यूज्ड इन अ clinical sense, it refers to a situation that causes discomfort and distress for a person and can lead to other mental health problems such as anxiety and depression. स्ट्रेस हमेशा खराब ही नहीं होता। स्ट्रेस में आके आदमी काम टाइम से कर लेता है और जैसे बच्चे एग्जाम के समय में टाइम से सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं जब टाइम फिक्स हो जाता है। स्ट्रेस में ऑल्सो contributes to physical illness such as cardiovascular disease. When stress turns into a serious illness, it's important to get professional help as soon as possible. Untreated anxiety disorder can lead to serious depression. लेकिन अगर यही स्ट्रेस सीरियस हो जाए तो वो फिजिकल इलनेस का कारण बन जाता है। कार्डियो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रेस अफेक्ट एज इन मैनी वे इंक्लूडिंग इमोशनली, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, एंगर, ये सारी चीजें होंगी। द वे वी थिंक, पुअर कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, इंडिसिसिवनेस, एपैथी, होपलेसनेस, हर तरह से आपको लगता है कि अरे हम तो बेकार हैं। बिहेवियरली इंक्रीज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इंसोमिया, एक्सीडेंट प्रोनेंस, वेट प्रॉब्लम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, नर्वसनेस, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। लोग सोचते हैं इसको करने से स्ट्रेस खत्म होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। योर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, your attitude, personality, and approach to life will influence how to respond to stress. Factors that play a part includes how you think about a problem, how anxious you feel generally, how severely the problem affects you, whether you have experienced anything like this before, whether you can control what is happening, how long the event affects you, how important the outcome is to you, the different way a person copes with difficult situations, your life experience and life history, your self-esteem, whether you have people around who can provide support. अब आप उसको कैसे स्ट्रेस को लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस कितना ज़्यादा या कम हो रहा है। स्ट्रेस एज अ हेल्थ प्रॉब्लम. As a health problem, stress occurs when a person feels that the demands made on them exceed their ability to cope. Factors contributing to the person feeling stress might include environment, work, home, school, lifestyle, emotional and personal problem, physical disorder. अब इसमें क्या होगा, आप इस पे डिपेंड करता है स्ट्रेस कि आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। अगर आपका एनवायरनमेंट, घर, वो काम करने की जगह, स्कूल में
डिफरेंट है और अच्छा नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसऑर्डर है कुछ, तो स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। स्ट्रेस एंड फिजिकली इलनेस। When we feel under stress, our body kick into high gear to deal with the threat. Our heartbeat, beating, breathing rate and blood pressure all go up. The larger we feel stress, the greater the demand on our body. High blood pressure, proneness to the infection and chronic fatigue. इससे आपको बहुत तबीयत फटीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। वॉट एवर द कॉज, फिजिकल डिजीज नीड अप्रोप्रिएट मेडिकल मैनेजमेंट बिफोर एनी अटेम्प्ट इज मेड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट। डिस्कस विथ योर डॉक्टर हाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट मे बी यूज्ड टू सपोर्ट ट्रीटमेंट ऑफ योर फिजिकल सिम्टम। अब आपको अगर स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Untreated stress can turn into a mental illness such as anxiety disorder or depression. Almost everyone experiences some anxiety. This is normal. However, an anxiety disorder is different from everyday anxiety. It is most severe, can persist and may influence with a person's daily life. Common anxiety disorder include generalized anxiety disorder. The person is constantly worried, often about irrational things and cannot be reassured. Panic disorder. Specific phobias such as fear of flying or of a spider, agoraphobia, fear of public place or being away from home. Social anxiety disorder, fear of scrutiny and judgment of others. A less common anxiety disorder is acute stress disorder. Anxiety is a very treatable condition. तो तरह तरह की एंजाइटी होती है। कोई मकड़ी से डर जाता है, कोई पब्लिक में जाने से डरता है, कोई हमको कैसे जज करेगा इससे हम डरते हैं। तो तरह तरह के डर है, आदमी को स्ट्रेस है। Anxiety is very treatable condition. There are many different psychological and medical options separately and in combination. Physiotherapy and medication therapy generally produce good result. तो उसको ट्रीट करने के भी बहुत से तरीके हैं। Untreated anxiety disorder and depression. Untreated anxiety disorder can lead to serious depression. Depressive illness is common. About 70% of Australians will suffer from depression at some time in their life. Depression is about twice as common in women as in men. The most common time in life for people to suffer from depression is their 40s. However, it can develop at any age. Depression is often associated with an increase in incidence of suicide. The annual suicide rate for people with a depression is 3 or 4 times higher than that of other psychiatric disorder. तो डिप्रेशन 40s के बाद ज़्यादा होता है, लेकिन डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है। स्ट्रेस एट वर्क। अब किसी को अपने काम के जगह पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस इन वर्क प्लेस इज कॉमन एंड इज कॉज्ड बाय many different factors including excessive hours, conflict with others, and feelings of isolation. The amount of stress a person experiences is often determined by whether or not they can accept that something in life will simply never be sorted out to their satisfaction. For example, a person may feel stressed by the way they are treated by their employer or by the behavior of work colleague. आपस के लोग कैसा बिहेव करते हैं या एम्प्लॉयर कैसा बिहेव करता है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है किसी से, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। समटाइम्स दिस स्ट्रेस कैन बी रिजॉल्व बाय डीलिंग विद द पर्टिकुलर बिहेवियर इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हरेसमेंट, victimization or unfair treatment. In many cases, the problem can be resolved if the behavior is changed. However, some people will never be fully resolved and you may have to accept them. For example, if someone who you think is poorly qualified is given a job you felt entitled to,
you may continue to feel stressed unless you are able to let go of the goodness and move on. अब आपको ये पता है कि जो दूसरा आदमी आपके जगह अपॉइंट किया गया वो कम एफिशिएंट है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको सेलेक्ट नहीं किया गया. स्ट्रेस मैनेजमेंट. नाउ हाउ वी कैन स्ट्रेस मैनेज. The old saying, prevention is better than cure, is certainly true for stress management. It will help if you exercise regularly. Regular exercise is a great way to manage stress. You should do some form of exercise that cause you to feel pumped afterward. A leisurely stroll to bus stop is not enough. Have at least 20 minutes of exercise 3 times a week. Take a walk. Lace up your shoes. A stroll around the neighborhood can lift your mood and bust stress. Stuck in a route in a rut, research show your next big idea could be just a walk away. It can boost creative thinking. Pick up a pen and list at least a few things you are grateful for today. Think about your relationship, things that went well, any positive part of your life, big or small. People who do this feel better, are less bothered by stress, and it can take very little time to do. What you have done good, just list down. Step outdoor for a few minutes to pull some weed, sit in a sunshine, or just get some fresh air. Research shows that time outside can give you more energy, a better memory, and less anxiety. Even if you in the city notice trees, flowers, and parks, soak up nature to give you yourself a boost. बाहर निकल जाइए नेचर में तो आपको अच्छा लगेगा. Avoid conflict. Avoid situations that make you feel stress, such as unnecessary arguments and conflict. Although ignoring a problem is not always the best way to reduce stress. Assertiveness is a fine, but becoming distressed is not. Find a friend or family member and ask for a hug. That warm squeeze will give you a lift and could even make conflict less unsettling. According to one study, hugging could also help your immune system. Another study says, relax. Give yourself some time to relax each day and try to spend time with people who make you feel good about yourself each day. Stretch yourself. Reach for your toes. Take a short breath to gently stretch your neck, shoulders, lower back, thigh and hips. The yoga moves like downward dog, mountain pose, or cat cow when you stretch. It lowers stretch and send extra blood to your muscles. Eat a smart snack. खाओ भी अच्छा. Fuel up, but keep it healthy and simple. Some ideas. Orange, citrus food are high in vitamin C, which is good for your immune system. Nut, enjoy a small handful of walnut, almond, or pistachio for some omega-3 fatty acid that even out your stress hormones. Whole grains, a bowl of oatmeal or piece of whole wheat toast could help your brain make more serotonin, which can improve your moods. अच्छा खाने से अच्छा सोचता है आदमी. Sleep. A good sleep routine is essential. If you have a difficulty falling asleep, do something calm and relaxing before you go to bed, like listening to music or reading. Enjoy your life. It's important to make time to have some fun and to get a balance in your life. To deal with the stress more effectively, it helps to investigate your stress and how you react to them. Connect. Call a friend to catch up, email a family member to check in, or text a colleague to meet you for coffee. Making contact with other people builds social connection
and give you more support. Studies support this. Better relationships are one of the best way to become happier. आप बहुत अकेले रहिएगा तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो लोगों को बुला के अपने पास आप इंजॉय कर सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. Check a core of your list. What small task has been lurking in the back of your mind for too long? Change that burden out light bulb. Return that email. Make that appointment. The satisfaction of getting something small done could stop stress and give you the momentum to tackle more. अब बहुत समय से कोई काम बचा था तो उसको करिए. Wish someone well. Practicing compassion for others tend to make you feel better too. Choose someone, a friend, family member, co-worker, or even a stranger. In your mind, send them wishes to be happy and healthy and live with ease. This quick exercise can make you more satisfied with your own life. आप दूसरों के लिए भी सोचिए तो आपको अच्छा लगेगा कि वो अच्छा हो जाए. Do a good deed. Open a door for someone. Donate a cause you believe in. Sign up for a volunteer project. Help a family member with a small task. Studies prove that when you show kindness to other people, it makes you feel good, and it can be a quick to do any day of the week. आप दूसरों के लिए कुछ करिए, उनको कुछ प्रोवाइड करिए, डोनेशन करिए, कुछ आप जो उनको लिए कर सकते हैं करिए. राइट अ थैंक यू नोट. जॉट डाउन अ फ्यू वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन टू समवन हु हैज हेल्प्ड यू. You can express thanks for recent favor, birthday gift, or long-lasting support. One study showed people who did this actually trained themselves to be more grateful. अब आप किसी को अगर छोटा सा थैंक यू बोलने से उसको खुशी होती है तो आप उसको थैंक यू बोलिए. गिव योर सेल्फ अ पेप टॉक. आई कैन हैंडल दिस. स्ट्रेस आने पर अगर आप कहते हैं कि आई कैन हैंडल दिस, देन यू कैन हैंडल दिस. Practice positive self-talk. Try to reverse any negative thought you have. If you are worried about a mistake, you may tell yourself, everyone messes up, I can fix it. Say few upbeat mantras to yourself out loud. It can change your thinking and cut your stress. अपने से बात करिए और ये सोचिए कि नहीं, हम इसको कर लेंगे चाहे जितना प्रॉब्लम आए. हैव अ लाफ. रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ फनी बुक विच अ क्लिप ऑफ योर फेवरेट कॉमेडियन और कॉल अ फ्रेंड हु ऑलवेज क्रैक यू अप. Laughter obviously lighten your mood, plus it stimulates your heart, lungs and muscles. It makes your brain release more feel good endorphins, and it can relax your muscles and help your circulation. हंसना भी एक अच्छी कला है. Understand what situation make you feel stressed. Understand what situation you can and can't control. Prepare for stressful event in advance by thinking about the future. Keep yourself healthy with good nutrition, exercise and regular relaxation. ये जनरल एडवाइस है कि ये सब चीजें आप करिए. Getting help for stress. You should see your doctor or community health center if you feel stressed often. Practice things stress you and you feel they are beyond your control. You feel your reactions to stress are extreme or worry you. You feel anxious or depressed about stress. आप अपना डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या नहीं आप कर सकते वो बताइए, तो वो कुछ ना कुछ सलूशन बताएगा. उसके अलावा आप साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से मिल सकते हैं. दिस वे आप ऑनलाइन coping with the stress and an intro to mindfulness course developed by the clinical research unit of anxiety and depression at St. Vincent Hospital, Sydney, and University of New South Wales, Faculty of Medicine, Community Mental Health Service. सिडनी में एक हॉस्पिटल बना है जिसमें लोगों की ट्रीटमेंट होती है. यहाँ इंडिया में भी बहुत से हैं
आपको कंसल्ट करना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट से। थैंक यू। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो, kindly like, share and subscribe. I have given you so many tips to resolve your stress and come out of it. Thank you, viewers.